everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, we'll be covering computer awareness for the upcoming CBSE direct recruitment examination. In this video, I'll be dealing with the topic of softwares. Okay, so let us begin. This is a little bit about me. I had cleared the CBSE Assistant Secretary Examination 24-25, the Tier 1 and Tier 2, and I had also appeared for the interview. However, the recruitment had been cancelled by CBSE last year. So फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर के कंपोनेंट्स और सिस्टम यूनिट देख लेते हैं. वही आउटपुट डिवाइसेस वही जो हमने पहले पढ़े थे, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, ब्रेल रीडर, हेडफोन, प्लॉटर्स, प्रोजेक्टर एक्सेट्रा. देन स्टोरेज डिवाइसेस क्या है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस. प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैशे मेमोरी होता है कंप्यूटर सिस्टम का. दिस इज़ द डायग्राम. सिस्टम यूनिट में क्या होता है, देयर इज़ अ हाउसिंग केस, कंप्यूटर चैसी, कैबिनेट होता है. Then all processing works takes place within the system unit. ठीक है, and inside the system unit we have the CPU, that is the central processing unit, the memory and the hard disk drive. ठीक है, in addition to this we also have the motherboard, floppy disk drive, power supply unit, CD-ROM drive. ठीक है, ये सब अब आजकल नहीं आता है इतना. नेक्स्ट सॉफ्टवेयर के बारे में देखते हैं. व्हाट इज सॉफ्टवेयर? पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज बेसिकली अ कंप्यूटर प्रोग्राम which has been written to carry out a particular task. ठीक है, बस एक प्रोग्राम है which will perform a particular task and that is known as a software. So उसका one more definition क्या रहेगा, a set of instructions to solve a particular problem. ठीक है, so examples of softwares are MS Office, antiviruses, WordPad etc. ठीक है, तो अभी we look at the interaction between hardware and software. सो हार्डवेयर्स में क्या होता है, सबसे पहले वी गेट एन इनपुट फ्रॉम देयर, है ना. प्रोसेसिंग आउटपुट भी हार्डवेयर के थ्रू ही होता है. प्रोसेसिंग, स्टोरेज, कम्युनिकेशन सब कुछ हार्डवेयर के थ्रू होता है. वेयर एज इन द सॉफ्टवेयर इट डील्स विद द सिस्टम, प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट, यूटिलिटी एंड मल्टीमीडिया. ठीक है, तो ये ऐसे इंडिकेटिव डायग्राम है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देख लेते हैं, दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, देन वी हैव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड देन वी हैव यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स. ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जिसके बिना द कंप्यूटर कैन नॉट बी वर्किंग. इट इज़ द मोस्ट बेसिक काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर ऑन विच द कंप्यूटर सिस्टम रन्स. ठीक है, सो एग्जाम्पल्स ऑफ दीज आर विंडोज़, MS-DOS, यूनिक्स, Xenix, iOS, Android, etc. ठीक है, this is the basic software on which the computer or the computing device works. Next we have application software. These are aimed for user comfort. So examples of these are MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, then photo editing apps, Corel Draw, etc. Then we have the utility software. These are basically aimed at increasing the capacity and the speed of a computing device. So for example we have antivirus systems, file manager etc. ठीक है, तो इसको कोई ऐसे लर्न कर लीजिए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को चलाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन, जैसे वर्ड फाइल बनानी है तो वी हैव MS वर्ड. ठीक है, और कोई टेबल बनाना है टैबुलर फॉर्मेट में, वी वांट टू स्टोर डेटा, वी हैव MS एक्सेल. ऐसे करके. और यूटिलिटी के लिए, दैट इज़ टू इंक्रीज स्पीड, स्टोरेज एक्सेट्रा, वी हैव यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स. नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स होते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एंड ट्रांसलेटर. ठीक है, तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स है विंडोज़, यूनिक्स, लाइनक्स एक्सेट्रा, है ना. और ट्रांसलेटर क्या होता है, लैंग्वेज प्रोसेसर को बोलते हैं. इट चेंजेस हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज. ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेजेस की एग्जांपल्स क्या हैं, C++, जावा, फोर्ट्रान एक्सेट्रा. और लो लेवल लैंग्वेजेस कौन से होते हैं, मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज. ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आर, यहाँ पे हमने पढ़ा था, दे आर अगेन ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज़ द ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ऑन विच द कंप्यूटिंग डिवाइस वर्क्स और runs, और the second one is the translator. ठीक है, which processes the languages, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा. नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली इट लिंक्स बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर. ठीक है, एंड इट हेल्प्स टू एक्सचेंज डेटा एज वेल.
ठीक है. सो एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर MS DOS, MS Windows, Microsoft Windows, Unix, Linux, etc. ट्रांसलेटर्स का जो कैटेगरीज देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ कंपाइलर, देन वी हैव एन असेंबलर एंड देन लास्ट थिंग इज द इंटरप्रेटर. कंपाइलर क्या करता है? इट कन्वर्ट्स द हाई लेवल द इंटायर प्रोग्राम ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ मशीन लैंग्वेज. ठीक है. सो जो सोर्स लैंग्वेज वो हाई लेवल लैंग्वेज की फॉर्म में होती है. इट गोज इनटू द कंपाइलर विच कन्वर्ट्स इट इनटू द मशीन लैंग्वेज. आफ्टर दैट जो असेंबलर है ना, वो असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी टर्म्स में कन्वर्ट कर देता है. असेंबली लैंग्वेज मतलब लो लेवल लैंग्वेज को बाइनरी टर्म्स में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है. देन इंटरप्रेटर क्या करता है? इट चेंजेस लाइन टू बाइनरी लैंग्वेज. ये एक लाइन, दो लाइन, सारी लाइंस को इट कन्वर्ट्स इनटू बाइनरी लाइंस, बाइनरी लैंग्वेज की लाइंस में. ठीक है. सो ये तीन रहते हैं: कंपाइलर, assembler. Compiler converts the entire program into machine language, that is यहाँ पे. उसके बाद assembler converts it into binary language as and interpreter changes it line by line into binary language, into binary language. हाँ. Next है evolution and types of operating systems. So first of all we have MS-DOS. So Microsoft Disk Operating System. It was launched in 1981. It works on text user interface, ठीक है, और character user interface. It does not support multimedia like video games etc. ये नहीं support होते हैं. There is a single window system in this and there is no mouse support. Next, MS Windows. This is very popular in India. It works on graphics user interface. ठीक है. यहाँ पे क्या था? text user interface था. यहाँ पे GUI है. It was announced in 1983. The first Windows came out in 1985. ठीक है. तो विंडोज़ 1 आया था 1985 में. इसका कैलकुलेटर, कैलेंडर, MS पेंट, वर्ड प्रोसेसर ये सब थे उसमें. विंडोज़ 2 केम आउट इन 1987. इसमें मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज का ऑप्शन था. विंडोज़ ग्राफिक्स आरे था. विंडोज़ 3 में ग्राफिक यूजर्स इंटरफेस अच्छे से डेवलप हो गया था 1990 में. विंडोज़ 3.1 में 1 MB रैम वॉज प्रोवाइडेड एंड 15 MB का हार्ड डिस्क वॉज ऑल्सो गिवन. देन विंडोज़ 95 में बस इतना ही दिया है. विंडोज़ CE दैट इज़ एम्बेडेड कॉम्पैक्ट केम इन 1996. देन विंडोज़ 98 1998 में आया था. विंडोज़ 2000 एंड विंडोज़ ME दैट इज़ मिलेनियम एडिशन had come out in 2000, in the year 2000, एंड उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह इंट्रोड्यूस कर दिए थे. विंडोज़ XP, XP stands for experience. It came out in 2001 and it also had antivirus support with it. Then Windows Vista came in 2006. Then we have Windows 7 in 2009, 8 in 2012 and Windows 10 in 2015. ठीक है. यूनिक्स का देख लेते हैं. यूनिक्स stands for Uniplexed Information and Computing System. Came in 1969. It is faster than Windows operating system and Mac operating system and it's a very high security operating system. ठीक है. नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कर्नल, शेल एंड एग्जाम्पल्स. तो पार्ट्स क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के? कर्नल होता है एक तो, विच इज़ द ब्रिज बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर. देन वी हैव द शेल. It basically interprets the given command and it acts as an interface between user and the kernel. ठीक है. And program further proceeding with the help of Unix code. ठीक है. तो यूनिक्स का एग्जाम्पल क्या है? सोलरिस, लाइनस, मैक OS, फ्री BSD एंड ओपन BSD. ठीक है. तो कर्नल क्या रहेगा? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में ब्रिज. शेल विल interpret the command given by the user and it acts as an interface between the user and the kernel. और प्रोग्राम क्या है? further proceeding with the help of Unix code. फिर लाइनक्स का देख लेते हैं. लाइनक्स स्टैंड्स फॉर लवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग XP.
and it is only kernel based. ठीक है. It was made in 1991. ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है. लाइनक्स बेस्ड सिस्टम्स के एग्जांपल्स हैं एंड्रॉयड, फेडोरा, उबुंटू. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एंड्रॉयड इज़ बेस्ड अपॉन लाइनक्स. नेक्स्ट एंड्रॉयड का देख लेते हैं. इट वॉज लॉन्च इन 2007. बेटा वर्जन केम आउट देन. इट इज़ ऑपरेटेड प्राइमरली बाय गूगल. एग्जाम्पल क्या है? कप केक, एक्लेयर, डोनट, जिंजर ब्रेड, ये सब. एंड प्रेजेंटली एंड्रॉयड 12 इज़ रनिंग. ठीक है. एप्पल का क्या है? मैक ओएस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. उसका फुल फॉर्म क्या है? मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम. इट केम आउट इन 1984. Now we'll look at some types of operating systems. Operating system acts as an interface between the user and the computer. ठीक है, ये हमने पढ़ा ही था. Operating system based on user. There are these types of operating systems. A single user operating system that allows only one user and manages all computer resources for that one user only. तो इसकी examples हैं MS-DOS, Windows 10, 11, Mac OS. ठीक है. Multi-user operating systems which allow two or more users to access the computer at the same time. So Linux, Mac OS or Unix. All of these are examples of multi-user operating systems. ठीक है. उसके बाद में types of operating systems. So first of all we have batch operating systems, then we have multi-programming operating systems, then we have multitasking time or time sharing operating systems, then multi-processing operating systems, then we have distributed operating systems और फिर network operating systems रहते हैं, then real time operating systems रहते हैं और mobile operating systems रहते हैं. ठीक है. दिस वन विल अगेन डू इट कि कर्नल क्या रहेगा? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में ब्रिज. शेल विल इंटरप्रेट द कमांड्स गिवन बाय द यूजर and it will act as a interface between the user and the kernel. ठीक है. प्रोग्राम रहता है. लाइनक्स क्या है? इसी के एंड्रॉयड वगैरह इसी पे बेस्ड है. लवेबल इंटेलेक्ट, नॉट यूजिंग एक्सपी. इट इज़ ओनली कर्नल बेस्ड. ठीक है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन द कर्नल. देन एंड्रॉयड का पता चल गया था और एप्पल भी देख लिया था हमने. नाउ वी लुक एट द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स. तो पहले क्या था? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में सिमिलर जॉब्स आर कलेक्टेड एंड एग्जीक्यूटेड टुगेदर ऑटोमेटिकली विदाउट एनी यूजर इंटरेक्शन. ठीक है. सो इट वर्क्स ऑटोमेटिकली, रन्स सिमिलर जॉब्स टुगेदर वन आफ्टर द अदर. So examples of these are payroll processing, bank statement generation, billing cycle, etc. इसमें क्या होगा? सिमिलर जॉब्स को एक बैच बना लेते हैं जॉब्स का एंड दे आर एग्जीक्यूटेड टुगेदर ऑटोमेटिकली विदाउट एनी यूज़र इंटरेक्शन. तो जैसे यूज़र ने ऐसे बहुत सारे जॉब्स दिए हैं तो इनको दे कैटेगराइज इनटू बैचेस. ठीक है. एंड देन दिस बैच इज एग्जीक्यूटेड वंस एट वंस, मतलब टुगेदर एक साथ कर देते हैं उनको सबमिट. ठीक है. सो नेक्स्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. इसमें मोर देन वन प्रोग्राम कैन बी लोडेड इनटू अ मेमोरी एंड एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू एट द सेम टाइम. ठीक है. तो ऐसे 4-5 प्रोग्राम्स को एक साथ लोड कर देते हैं एंड दे कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू एट द सेम टाइम. इट अलाउज मेनी प्रोग्राम्स टू रन टुगेदर सो दैट द सीपीयू नेवर स्टेज आइडल. ठीक है. नेक्स्ट है टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. इसमें इट अलाउज मैनी यूजर्स टू यूज द कंप्यूटर सिस्टम एट द सेम टाइम बाय शेयरिंग द सीपीयू टाइम अमंग देम. Then it gives each user a small share of the CPU time so that many users can use the system at once. ठीक है. Examples of this are Unix, Linux, Multics, etc. ठीक है. 5-6 यूजर्स एक टाइम पे they can use it and CPU allots small share of the CPU time to each user. Next, multi-processing operating system. A multi-processing operating system is an operating system that uses 2 or more CPUs within a single computer to perform the tasks simultaneously. ठीक है. इसमें क्या कर रहे थे? CPU का टाइम को allocate कर रहे थे थोड़ा थोड़ा दूसरों को, और इसमें तो there are multiple processors themselves. ठीक है.
It makes the system quite fast and efficient. Examples are Unix, Linux, Windows Server, etc. Then we have distributed operating system. Distributed operating system is a system that connects many computers through a network and makes them work together as a single computer. ठीक है? सो डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या रहेगा, बहुत सारे कंप्यूटर्स रहेंगे, दे विल बी कनेक्टेड ऑन अ नेटवर्क एंड दे वर्क टुगेदर एज अ सिंगल कंप्यूटिंग यूनिट. ठीक है, सो एग्जांपल्स ऑफ दिस आर क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, अमीबा, प्लान 9, लोकस एक्सेट्रा. ठीक है, इसके बाद में नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. A network operating system is an operating system that connects many computers together through a network so that they can share files, data and devices like printers. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में पूरा जो नेटवर्क पे सारे कंप्यूटर्स हैं दे फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट, और इसमें तो बस दूसरे दूसरे कंप्यूटर्स पे डेटा शेयर करने के लिए, डेटा एंड फाइल्स एक्सेट्रा, और या डिवाइस भी अगर शेयर करने हैं, even for that network operating system is used. Many computers are connected and sharing resources. ठीक है, आपने देखा होगा कंप्यूटर, आप इंटरनेट कैफ़े वगैरह जाते हैं ना, सो वहाँ पे आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के इफ़ यू गिव द प्रिंट कमांड देन ऑल्सो जो जो शॉपकीपर टाइप रहता है ना, जिस उसके कंप्यूटर पे जो प्रिंटर रहता है उस पे से द प्रिंट आउट विल कम आउट. ठीक है, सो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर इज़ the device is being shared by different computers which are connected on a network. Next is real-time operating systems. An operating system that gives a quick and immediate response to inputs is known as a real-time operating system. It is used where time and speed are very important. So the real-time operating systems have fast response and good time accuracy. ठीक है, तो ऑपरेटर ये ऐसे एक डायग्राम दिया है. ऑपरेटर रियल टाइम कंप्यूटर सिस्टम पे मैन मशीन इंटरफेस रहेगा और दे विल कंट्रोल एन ऑब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंटेशन इंटरफेस के थ्रू दे विल बी वर्किंग. ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम विल हैव फास्ट रिस्पॉन्स एंड टाइम एक्यूरेसी एज वेल. एग्जांपल्स आर VX वर्क्स, QNX, RT Linux and Windows CE. Then mobile operating system क्या है? It is a software that controls and manages all functions of a smartphone or a tablet. It allows users to run apps, makes calls, play games and use the internet. So Android पे जैसे Google होता है, सॉरी एंड्रॉयड गूगल का एक वो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है. सिमिलरली एप्पल का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ iOS. देन वी हैव हुआई का हार्मनी OS. देन मोजिला फायरफॉक्स के बारे में सुना होगा है ना, उसका काई OS रहता है. ठीक है, उसके बाद में वी लर्न अबाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स. इट इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम designed to perform specific tasks or applications for the user. It helps the users to perform productive, creative, or entertainment activities such as word processing, accounting, designing, browsing the internet, etc. So there are following types of application softwares. First one is general purpose software. Then we have the customized software, then specialized software and web-based softwares. General purpose software में क्या है? They are used for common tasks like MS Word, MS Excel, PowerPoint, Paint. ठीक है, तो जनरल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं इसको. उसके बाद में कस्टमाइज सॉफ्टवेयर रहता है. इट इज़ डेवलप्ड फॉर अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन और अ पर्पस. तो जैसे कस्टमाइज्ड रहता है उसके लिए, है ना, किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए. सो फॉर एग्जांपल वी हैव स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स और हॉस्पिटल का बिलिंग सॉफ्टवेयर रहता है, वो सब. ठीक है, then we have specialized softwares. These are used in professional and scientific fields. So specialized मतलब specialized fields में use करते हैं. So for example AutoCAD रहता है ना, for designing, mechanical engineers वगैरह they use this. Then we have Tally accounting purposes के लिए. Then we have MATLAB for again engineering purposes. Next web based softwares क्या रहेंगे? They run on web browsers via the internet. So examples of these are Google Docs, Gmail, YouTube, etc. ठीक है, these are all web based softwares. Next we go to the utility softwares.
Utility software क्या है? It is basically a system support software that helps manage, maintain and protect the computer system. It assists the operating system by performing specific maintenance tasks to ensure smooth working of the computer. ठीक है, तो बेसिकली सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए ये यूज़ होता है एंड दे परफॉर्म मेंटेनेंस टास्क्स टू इंश्योर स्मूथ रनिंग ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है, तो इसमें एग्जांपल्स क्या है? नहीं, टाइप्स क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स रहेंगे, फाइल मैनेजमेंट के लिए रहेगा सॉफ्टवेयर, डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटीज़ रहेंगे, बैकअप सॉफ्टवेयर्स रहेंगे एंड देन वील आल्सो हैव कंप्रेशन सॉफ्टवेयर्स. Antivirus software basically protects the computer from viruses, malware, spyware, etc. Examples are Quick Heal, Avast, McAfee, etc. Then file management के लिए they help to organize, copy, move and delete files. Examples are File Explorer, WinRAR, etc. Disk management क्या रहेगा? Maintains hard drives and storage devices. For example, disk cleanup, disk defragmenter. Then backup software will it creates copies of data to prevent losses. So examples क्या है? Acronis, True Image, Google Drive. ठीक है. Next है reduces compression software क्या है? It reduces the file size for easy storage or sharing. So example क्या है? WinZip. ठीक है, वो zip folders बन जाते हैं ना. That is one example. Then 7zip. और यहाँ पे आपने गूगल ड्राइव आपने देखा होगा कि आपका जो जैसे डिवाइसेस है, मोबाइल या टैबलेट है, उसका दे आर यूजुअली बैक्ड अप बाय गूगल ड्राइव. ठीक है, तो उसमें वट एवर फोटोज विच यू क्लिक दे यूजुअली गेट सेव्ड ऑन द गूगल ड्राइव ऑल्सो. सो इट एक्ट्स एज अ बैकअप सॉफ्टवेयर हियर. ठीक है, सो इन केस द डिवाइस क्रैशेस या कुछ गलती से डिलीट हो जाता है, यू विल स्टिल हैव दैट मटेरियल ऑन द गूगल ड्राइव. ठीक है, so now we look at the PYQs. So for the PYQs, we will be doing all the previous year questions of KVS, NVS or EMRS or the DSSSB examinations. See, these three examinations, the paper is conducted by CBSE itself. ठीक है, तो the pattern is quite very similar. In fact, it is the same as that of the CBSE direct recruitment examination. Therefore, मैंने पुराने क्वेश्चंस भी देखे थे दोनों के एंड दे वर क्वाइट सिमिलर. सो दैट इज़ व्हाई वी आर डूइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ दीज एग्जामिनेशंस. ठीक है, और इसके भी इस पैटर्न सिमिलर होता है. दैट इज़ व्हाई वी आर डूइंग द previous year questions of these examinations. So first of all, we have which of the following is not known for antivirus software. Which of the following is not an antivirus software? So Avast, McAfee or Kaspersky are examples of antivirus softwares. However, Ubuntu is not an antivirus software. ठीक है, it is basically an operating system based on Linux kernel. It is not an antivirus software but a system software. ठीक है, whereas Avast, McAfee, Kaspersky are all well-known antivirus softwares used to protect computers and devices from malware. Next, which of the following is a type of fraudulent practice where emails or messages appear to be from trusted companies to trick individuals into sharing personal information like passwords and credit card details? So, for the answer for this will be phishing. ठीक है, तो फिशिंग क्या होता है? इट इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ साइबर फ्रॉड इन विच फेक ईमेल्स और मैसेजेस pretending to be from trusted sources are used to deceive the users into sharing sensitive information such as personal identity details, banking information, credit card details and passwords etc. Next है an information system is a combination of hardware and dash. So the answer is software. This is a very simple question. An information system is a structured combination of hardware, software and communication networks used within an organization to collect, process, store and distribute data. ठीक है,
नेक्स्ट है which of the following communicates with the hardware and controls devices and peripherals attached to a computer. So the options are device driver software, shareware, application software या freeware. So the answer for this will be device driver software. ठीक है, basically a device driver software allows the operating system to communicate with the hardware devices such as printers, scanners, mice, keyboard, etc. It works as a translator between the operating system and the hardware. ठीक है, तो उसका द नेम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर मतलब हार्डवेयर के जो भी डिवाइसेस हैं दोज विल बी एबल टू इंटरैक्ट विद द सॉफ्टवेयर विद द हेल्प ऑफ द डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर. तो इसमें एग्जांपल दिया है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स अ कमांड टू प्रिंट डॉक्यूमेंट, तो ये कमांड विल गो टू द translate or the device driver. So the translator or the device driver will send this command to the printer, or that will be in the form of binary numbers, and then it will print the required document. Next है which of the following is or are the functions of the search box in the file explorer window. So क्या कह रही है, टू सर्च फॉर अ फाइल इन एन एक्टिव फोल्डर, ये सही है. Then to search for a file in all subfolders within a current folder, this is also correct. To search for a file or folder on the entire computer, this is also correct. So all three are correct here. The search box in Explorer can be used to search files within the active folder, its subfolders, and across the entire computer, depending upon the search scope. Next है बग और डिबग पे है. कंप्यूटर जनरेट्स इनकरेक्ट आउटपुट्स फॉर इनकरेक्ट इनपुट्स. दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज which of the following? Diligence, garbage in, garbage out, reliability or versatility. So the answer for this is garbage in, garbage out. ठीक है, this is the answer. Garbage in, garbage out, GIGO का जो concept है, it states that if incorrect data is entered into a computer system, the output will also be incorrect. ठीक है, so if you send garbage inside CPU, you will get garbage outside. ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. तो क्या क्या दिए हैं, एम एस विंडोज, लाइनक्स, मोजिला फायरफॉक्स एंड मैकओएस. सो द आंसर फॉर दिस विल बी मोजिला फायरफॉक्स, बिकॉज मोजिला फायरफॉक्स इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है, गूगल क्रोम जैसा होता है एंड इट इज़ यूज फॉर इंटरनेट ब्राउजिंग, whereas Windows, Linux and Mac operating system are operating systems. Next, an operating system is an example of which of the following: system software, application software, language processor या utility software. So the answer for this is system software. ठीक है, an operating system is a system software that manages computer hardware, software resources, and provides an interface between the user and the computer. Examples include Windows, Linux, Mac operating system, etc. ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड्रॉयड, कैलसी, मैकाफी या एम एस टीम्स. सो द आंसर फॉर दिस इज एंड्रॉयड. तो एंड्रॉयड इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम designed mainly for smartphones and tablets, whereas Calci is a spreadsheet program. ठीक है, तो ये बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टाइप हो गया. McAfee is an antivirus software, so this will become a utility software. And MS Teams is a communication application. ठीक है, तो communication application is again application software. Next है which of the following is not an example of an operating system. So the options are MS Windows, Ubuntu, Apple, Safari या Android. So इसमें से the answer will be Apple Safari, which is basically a web browser, not an operating system. ठीक है, Windows, Ubuntu and Android are operating systems. Next, which of the following is not an example of an operating system? फिर से तो Microsoft Bing,
Linux, Ubuntu या iOS. So the answer for this will be Microsoft Bing, which is again a web browser, web search engine है Bing. ठीक है. Linux, Ubuntu and iOS are operating systems. Next, which of the following is not an example of an operating system? MS Windows, Ubuntu, Apple Safari या Android. So the answer for this will be Apple Safari, which is again a web browser. ठीक है, it is not an operating system. Next, which of the following is an operating system? So क्या क्या दिया है? Premiere Pro दिया है, Tally दिया है, Android, Safari. So the answer is Android. Android is an operating system used to run smartphones and other mobile devices, whereas Premiere Pro, Tally, Safari, etc. are application softwares. ठीक है. नेक्स्ट है, लेट मी चेक टैली में क्या रहता है. सो टैली इज बेसिकली अ कॉम्प्रिहेंसिव. ये जो टैली होता है ना, ये अकाउंटिंग सर्विसेज के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. ठीक है. प्रीमियर प्रो इज फॉर वीडियोज और फोटोज एक्सेट्रा. सफारी इज अ वेब ब्राउजर. Next, which of the following is an operating system? So Linux, LibreOffice, Google Meet, MS Teams. So the answer is Linux. Linux is an open source operating system that works as an interface between hardware and users. LibreOffice and MS Teams are applications. ठीक है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग. दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन है, हर एग्जाम में यही पूछते हैं. Which of the following is an operating system? Google Meet, MS Teams, LibreOffice या Ubuntu. So Ubuntu is an operating system. It is a Linux based operating system that manages computer hardware and software resources. ठीक है. Next है, which of the following is responsible for managing computer system resources such as memory management, CPU management and process management. So मैनेजिंग के लिए किसको यूज़ करते हैं? The options are operating system, spreadsheet, linker, motherboard. So the answer will be operating system. ठीक है. The operating system basically manages hardware resources such as memory, processor, input-output devices and ensures smooth coordination between them. Next, which processing method provides interaction between the computer system and multiple users? Computer system or users in such a way that each user feels that they are the only user on the system. ठीक है. तो इसका एग्जाम्पल्स क्या है? टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी टास्किंग या मल्टी प्रोग्रामिंग. सो द आंसर फॉर दिस विल बी टाइम शेयरिंग. ठीक है. टाइम शेयरिंग अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू यूज अ कंप्यूटर सिस्टम इंटरैक्टिवली by allocating CPU time slices, giving each user the impression of exclusive access. This is very important. अगर एक्सक्लूसिव एक्सेस का इम्प्रेशन चाहिए तो वील बी हैविंग टू डू टाइम शेयरिंग. ठीक है. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. सो द एग्जांपल्स आर विंडोज, MS DOS, यूनिक्स और iOS. सो द आंसर फॉर दिस इज MS DOS. इट इज़ अ सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम. इसमें सिंगल विंडो सिस्टम भी होता है. ठीक है. Whereas Windows, Unix and iOS support multi-programming. Next, which of the following is not a multitasking operating system? Similar question है. Linux, Unix, Windows 7, MS-DOS. So the answer is MS-DOS. ठीक है. MS-DOS is a single task operating system, while Linux, Unix and Windows support multitasking. Which of the following is an open source operating system? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल्स क्या दिए हैं? MS DOS, iOS, Linux या Windows. So the answer for this is Linux. Linux is an open source operating system whose source code is freely available for modification and redistribution. ठीक है.
इसका सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल है, देयरफॉर people can modify it and use it as per their own convenience, और वो न्यू चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, सोर्स कोड अगर ऑनलाइन प्रेजेंट होता है ना किसी भी सॉफ्टवेयर का, then you can make changes to the software and use it according to your own convenience, or you can develop new products from it as well। ठीक है, और जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें जो सोर्स कोड होता है वो प्राइवेट होता है। ठीक है, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोर्स कोड टू टाइप्स के होते हैं, ओपन सोर्स रहता है या फिर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर रहता है। ओपन सोर्स में द सोर्स कोड इज पब्लिक, वेयर एज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में इट इज प्राइवेट। नेक्स्ट है, which of the following uses hardware resources to manage execution of multiple applications? तो हार्डवेयर रिसोर्सेज टू मैनेज एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन क्या क्या है? ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क फ्रैगमेंटर, डी फ्रैगमेंटर, translator or word processor. So the answer for this will be operating system. The operating system manages the execution of programs and allocates hardware resources efficiently, thus acting as the bridge between software needs and physical hardware. Next है, which of the following controls the hardware resources of a computer system? So options are utility software, compiler, operating system, or word processor. So the answer for this one is again operating system. The operating system acts as the central coordinator, managing the communication between the user and specific hardware resources like CPU, memory, peripherals, etc. Next है, which of the following is not an operating system? So the options are Unix, Windows, Linux, or Opera. So answer will be Opera. Opera is basically a web browser. It is an application software, whereas Unix, Windows, and Linux are operating systems or system softwares. ठीक है. The next question is, which of the following processing parameters can be defined as the interval between submitting a job to the system and the completion of that job? अच्छा, तो इनका ऑप्शंस क्या है? रिस्पॉन्स टाइम, टर्न अराउंड टाइम, थ्रूपुट या लेटेंसी। सो द आंसर फॉर दिस इज द टर्न अराउंड टाइम। Turnaround time is the total duration calculated from the moment a job is submitted to the system until the moment that it is fully completed. ठीक है, this is known as the turnaround time. Next है, the Android mobile operating system, which is an open and free software stack, was developed by which of the following companies? So the answer for this is Google. ठीक है, the Android mobile operating system is an open and free software stack that was developed by Google in 2007. Next, in the context of an operating system, when two or more programs reside in a memory at the same time, it is called which of the following? Multi-programming, batch processing, job scheduling, or multitasking. So the answer for this will be multi-programming. ठीक है, multi-programming basically allows multiple jobs, two or more programs to reside in the main memory at the same time, allowing the CPU to switch between them to maximize utilization. Next है, which of the following is a basic file system for Unix systems? So the examples are JFS, GPFS, XF. एग्जाम्पल नहीं, ऑप्शंस हैं JFS, GPFS, XFS या UFS। तो बेसिक फाइल सिस्टम का इसका आंसर है UFS। ठीक है, UFS stands for Unix file system. So Unix file system is the standard file system for Unix. It is specifically designed to provide high performance, scalability and low disk usage. ठीक है, नेक्स्ट है, which of the following is not an operating system? So the options are Blu-ray, OS 400, Windows OS or Linux. So the answer for this will be Blu-ray. Blu-ray is not an operating system. It is a physical optical disc format used for storage, whereas Unix, Linux, operating system 400 or Windows are system softwares that manage resources. ठीक है, Blu-ray basically
एक फिजिकल ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट ऐसे दिखता है and it is used for storage. Next है, which of the following operating systems can be classified as both multitasking as well as multi-programming? The options are MS-DOS, Windows 10 or Linux. So the answer for this will be both Windows 10 as well as Linux. तो मतलब option C. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, Windows 10 and Linux perform a modern class of operating systems supporting both multitasking as well as multi-programming. MS-DOS whereas is limited to performing only one task at a time. ठीक है, तो MS-DOS में सिंगल टास्क होगा, there is no multitasking. Whereas Windows 10 या Linux में there is multitasking and multi-programming as well. Next है, which of the following statements related to the operating system are true? It provides an environment in which users and application softwares can do work. Yeah, it manages resources of the computers and allocates them efficiently. So the answer is both of these. ठीक है, both 1 and 2. An operating system is a comprehensive system software. It not only provides the working environment for users or apps, but also performs critical management of files, memory, processes, security, and scheduling. ठीक है? Next है, which of the following statements about NTFS is false? तो NTFS का full form वैसे होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम. ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम. So the options given are, हमें false बताना है कौन सा है. Options are NTFS partitions cannot extend beyond 8 GB. ठीक है, so this itself is false. Next क्या है, NTFS stands for New Technology File System. This is correct. NTFS partitions can be read from and written to by Windows and Linux. This is also correct. Files stored on NTFS partitions can be as large as the partition. This is also correct. Okay, so the correct answer is NTFS, this first one, which is false. NTFS, which is developed by Microsoft, allows partitions that significantly exceed 8 GB. It is designed for large storage solutions. ठीक है, तो 8 GB लिमिट नहीं होता है और एक्चुअल NTFS कैपेसिटी एक्साबाइट्स में होती है. ठीक है. Next, which of the following mobile operating systems was developed by Nokia? Options क्या हैं, बड़ा या Android? So the answer for this is neither one or two. Neither of the operating systems belong to Nokia. BADA Bada was a proprietary operating system developed by Samsung, and Android is an operating system developed by Google. ठीक है, तो try to remember this कि Samsung ने बड़ा करा था develop and Android was developed by Google. Next, we have to find which of the following statements are false. Android is an open source operating system for mobile devices. हमें false बताना है ना, this is a true statement. ठीक है. Next, iOS mobile operating systems was developed by Microsoft. This is false. It is developed by Apple. ठीक है. So only two. The second option is false. Android is open source, ये पता है हमको, and it is developed by Google. However, iOS was developed by Apple and not Microsoft. Next है, which of the following statements related to the Linux operating system is false? So the first statement is it is an open source operating system. So this is a क्या है, अच्छा false. देखो ये this is true. Linux open source होता है, ये हमने we have studied this a number of times. Then it can be characterized as both multitasking and multi-user operating system. This is also true. ठीक है, so neither of the two statements are false. So Linux is open source based on the Linux kernel developed by Linus Torvalds in 1991 and supports both multitasking as well as multi-user functionality. ठीक है. Next है, which of the following statements about FAT is false? FAT stands for
फाइल एलोकेशन टेबल. ठीक है. So file names can use both forward slash as well as backward slash. हमें false बताना है ना. So this is the false. This is wrong. ठीक है. Files the FAT can use only backward. मतलब they can not use either of these two slashes. बाकी कुछ भी use कर सकते हैं. ठीक है. Then FAT uses the traditional 8.3 file naming convention. This is also correct. FAT file names use the ASCII character set. This is correct. File names must start with a letter or a number. This is also correct. ठीक है. So file allocation table stands for वही file allocation table. In this system, file names are strictly prohibited from using forward slashes or backward slashes. ठीक है. So the answer for this is option A, which is the only one which is false. So wait, I'll tell you a little bit more about file allocation table. File allocation table, basically it is a file system structure used by operating systems to manage data on storage devices. ठीक है. तो जो operating systems होते हैं ना, they primarily use FAT to manage the data on the different storage devices. ठीक है. बस इतना ही. This is the only important portion from here. और ये काफ़ी नीश कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है ना. सो जस्ट डू द PYQs एंड गो. इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ओनली समटाइम्स सच क्वेश्चंस आर आस्क्ड. ठीक है. सो इफ़ यू स्टार्ट रीडिंग everything in such detail, then the syllabus won't get over. ठीक है. So just do the PYQs for these types of questions. Next है, fat partitions are limited in size to a maximum of dash under Windows NT and dash in MS-DOS. So the answer for this is 4 GB and 2 GB respectively. So Windows NT supports fat partitions up to 4 GB, whereas MS-DOS is limited to 2 GB only. ठीक है. Now which of the following is a type of operating system? Time sharing operating system, distributed operating system, and network operating system. So all three are kinds of operating system. We had already learned this in the theory portion. An operating system acts as the interface between hardware and software. ठीक है. Valid types include batch multi-programming, time sharing, distributed operating systems, network, multi-processing systems, और real time operating systems. ठीक है. हमने 8 टाइप्स पढ़े थे इससे पहले थ्योरी में. यू कैन रेफर टू दोज. नेक्स्ट है, व्हाट इज अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. बेसिकली अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्ट्स मल्टीपल यूजर्स वाया टर्मिनल्स एंड इट इज डिजाइंड टू कंट्रोल. नहीं, पूछ रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. क्या है, कनेक्ट्स मल्टीपल यूजर्स वाया टर्मिनल्स. नहीं, इसमें ये नहीं होता है. डिजाइंड टू कंट्रोल हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन. नो. No direct interaction between the user and the computer. This is correct. Executes multiple programs simultaneously. This is also not correct. ठीक है. So the answer is, the defining characteristic of batch operating system is that there is no direct interaction between the user and the computer during execution. ठीक है. अपने आप execute कर देता है. Jobs are processed sequentially in batches. First of all, the jobs are categorized into batches and then these batches are simultaneously, मतलब sequentially इनको execute कर देता है computer, and there is no interaction with the user while the execution is occurring. ठीक है. Next है, what is the full form of RTOS. RTOS stands for real time operating system. ठीक है. So the answer will be option B. It is designed for applications requiring strict time constraints and immediate processing. Next है, which type of operating system manages a group of independent computers and makes them appear as a single computer.
सो द आंसर फॉर दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट रहता है ना। वी हैड read this in the theory portion. A distributed operating system connects multiple independent computers via a communication channel. To the user, they function cohesively as a single powerful system. ठीक है, इसमें टाइम शेयरिंग नहीं रहता, दिस इज रॉन्ग, मैंने आई गॉट कंफ्यूज विद सम अदर कॉन्सेप्ट। डिस्ट्रीब्यूटेड में बस यही कॉन्सेप्ट मेन चीज़ रहती है कि दे एक्ट एज अ सिंगल पावरफुल सिस्टम। ठीक है, सिंगल कंप्यूटर जैसे एक्ट करता है पूरा नेटवर्क। और वेर एज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में देर आर डिफरेंट कंप्यूटर्स एंड द डिवाइसेज आर शेयर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is Microsoft Windows? So this is a very simple question, it is an operating system। ठीक है, नेक्स्ट है, which of the following software belongs to the category system software? So the answer for this is operating system। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके अलावा क्या होता है यहाँ पे, ट्रांसलेटर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ट्रांसलेटर होता है एक तो, और ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। नेक्स्ट, which of the following is the name of mobile operating system? So the answer for this is Android। Android is an example of a mobile operating system. It is based upon Linux kernel and it is designed primarily for mobiles and tablets। Next, which of the following is not an operating system? So क्या क्या दिया है, Unix, MS Office, Android और Linux। तो आंसर is MS Office, it is basically an application software। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टूल है, बाकी सब सिस्टम डिफेंडर्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? सो क्या क्या दिया है, लाइनक्स, मैक ओएस, एंड्रॉयड और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सो द आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विच इज अगेन अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इसका आंसर क्या है, एक तो लाइनक्स भी ऑपरेटिंग ओपन सोर्स है, और इवन एंड्रॉयड इज़ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, दिस वाज मेड बाय गूगल एंड इट इज़ मेड बाय द लाइनक्स, लाइनक्स के उस पर बना है ये, एंड बस इट इज़ फ्रीली अवेलेबल फॉर मॉडिफिकेशन, उसका जो सोर्स कोड है ना। Which feature of an operating system allows more than one program to run concurrently? So the answer for this is multitasking। ठीक है, मल्टीटास्किंग में मल्टीपल एक्टिव प्रोग्राम्स कैन बी मैनेज्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो the operating system task switcher comes into play in this case, and many programs can operate simultaneously। Which of the following is not a function of an operating system? The options are process management, memory management, file management और input data। Not a function पूछा है हमें, so the answer will be input data, because input data किसका concept काम है, user का काम है ना, data input करना। ठीक है, बाकी सारे memory management, process management, file management, that is the function of the operating system। Next, which of the following is not a type of an operating system? So examples क्या है, Linux, Windows 10, Mac OS, all of these three are operating systems। ठीक है, तो none of these रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, pressing Windows key and L together on a Windows system will do what? Windows और L अगर हम दबा देते हैं ना तो लॉक, दिस इज अ शॉर्टकट की फॉर लॉकिंग द सिस्टम। ठीक है, बाकी ऑप्शंस क्या दिए हैं, स्टार्ट सिस्टम, रीस्टोर नहीं, एक्टिवेट द इंस्टॉल्ड एंटीवायरस ये भी नहीं है, रीस्टार्ट भी नहीं होगा, इट विल लॉक द सिस्टम। ठीक है, विंडोज प्लस एल दबाने से। नेक्स्ट है, अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स systems where the computer must respond instantly without delay। So the answer is real time। ठीक है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहाँ यूज़ होते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में या कमांड कंट्रोल सिस्टम्स में दे आर यूज्ड। नेक्स्ट है, वी हैव टू मैच द फॉलोइंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एम एस डॉस, इसको किससे करेंगे, एम एस डॉस इज अ सिंगल टास्किंग सिस्टम, हमें पता ही है ना,
उसके बाद में विंडोज इज मल्टीटास्किंग एंड इट इज ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। फिर यूनिक्स क्या है, यूनिक्स इज केस सेंसिटिव। ठीक है, अपर केस लोअर केस में इट इज केस सेंसिटिव। ठीक है, सो द आंसर फॉर दिस विल बी द ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी यूजर एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर है एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सो द आंसर फॉर दिस विल बी लाइनक्स। ठीक है, बिकॉज देखो मल्टी यूजर तो विंडोज 7 भी है, बट विंडोज 7 इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है विंडोज इज अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय डैश, so the answer for this is it is a multitasking system developed by Microsoft। ठीक है, नेक्स्ट है tell whether it is true or false, every computer must have an operating system to run other programs, so the first one is true। ठीक है, there should be a operating system present in a computer। next, compiler or assembler converts object code into source code, तो ये गलत है, उल्टा करता है वो सोर्स कोड को। ठीक है, उल्टा चीज़ कर रहा होता है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्या है फर्स्ट का आंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम इज नेसेसरी फॉर रनिंग प्रोग्राम्स, और सेकेंडली सोर्स कोड को पहले मशीन कोड में कन्वर्ट करा जाता है, आफ्टर दैट इट इज कन्वर्टेड इनटू सोर्स कोड एंड देन ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, कंपाइलर्स डू नॉट रिवर्स ट्रांसलेट। ठीक है, so this is an important question। Then next है a computer can perform a variety of tasks at the same time. This characteristic is known as speed, versatility, diligence या accuracy. So the answer is versatility। ठीक है, versatility means performing different types of tasks simultaneously। Next है which of the following statements is correct? An operating system is an application software, तो ये गलत है बिल्कुल, it is a system software। Then presentation and documentation tools are examples of application software, this is correct। ठीक है, hard disks and RAM are external storage devices, so this is wrong, they are internal storage devices। then file compression softwares like WinZip are system software, नहीं application softwares होते हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्रेशन टूल्स, अच्छा इवन कंप्रेशन टूल्स आर सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, पता नहीं मेरे को, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। compression tools, let me check, wait a second, 74 है ना, ये कंप्रेशन सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। कंप्रेशन सॉफ्टवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अदर टाइप्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स आर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, हाँ, देन फाइल मैनेजमेंट जैसे फाइल एक्सप्लोरर, विनरार, ये सब they are also utility software। then we have disk management utilities like disk cleanup या disk defragmenter, this is also a utility software। then we have backup softwares like Google Drive, Acronis, TrueImage, etc। and compression softwares, all of these are utility softwares। ठीक है, so I'll go back to the original one, यहाँ पे थे ना हम लोग। तो ये WinZip यहाँ पे नहीं आएगा, WinZip will be a kind of utility software। Next, which of the following extensions represents executable program file? So, इसका आंसर क्या है, .bin। ठीक है, .bin is an example of executable बाइनरी प्रोग्राम फाइल। बाइनरी का bin यहाँ पे लगा रहता है। मैं बाकी भी बता देती हूँ, .wav जो होता है ना, that stands for waveform audio file। देन आफ्टर दैट .jpg, तो आप लोगों को सबको पता होगा, इमेजेस के लिए यूज़ करते हैं, है ना। इट स्टैंड्स फॉर, उसका फुल, वैसे फुल फॉर्म भी लिख लो, जॉइंट .jpg या jpeg भी लिखते हैं ना,
It stands for Joint Photographic Experts Group. ठीक है. And then we have .BAK. .BAK is a very common file extension indicating a backup copy of a file. ठीक है, तो बैकअप कॉपी को .BAK करके सेव करता है कंप्यूटर. और .bin का वैसे फुल फॉर्म वैसे तो बाइनरी होना चाहिए, बाइनरी फाइल ही बोलते हैं उसको. ठीक है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम मतलब बाइनरी के फॉर्म में रहेगा ना, बाइनरी प्रोग्राम के फॉर्म में, सो दैट इज बाइनरी फाइल. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following software is also called language processor? सो क्या क्या दिया है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं, ये भी नहीं है, असेंबलर एंड कंपाइलर, हाँ दिस इज ट्रू. देन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू. सो द आंसर फॉर दिस विल बी असेंबलर एंड कंपाइलर विच आर एग्जाम ऑल्सो नोन एज लैंग्वेज प्रोसेसर्स. ठीक है, तो हम जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो सोर्स कोड है, उसको डालेंगे लैंग्वेज प्रोसेसर में. Language processor has the compiler as well as the assembler and the interpreter also, and which gives us the machine code. ठीक है, उससे काम करता है कंप्यूटर. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज. इसको, हाँ इसको we'll just revise this once पहले. क्वेश्चन 77. ये रहा. तो 3 टाइप के ट्रांसलेटर्स या लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं, विच इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो इट बेसिकली चेंजेस द हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज. ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन से रहते हैं, C++, जावा, फोर्ट्रैन. ठीक है, इसमें वी यूजली गिव द कमांड्स इन दिस लैंग्वेज. वी मतलब जो प्रोग्रामर्स रहते हैं, प्रोग्राम्स आर यूजली इन हाई लेवल लैंग्वेजेस. ठीक है, और लो लेवल लैंग्वेज इज द लैंग्वेज विच द कंप्यूटिंग डिवाइस अंडरस्टैंड्स. तो इसके एग्जांपल्स क्या है, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एक्सेट्रा. तो ट्रांसलेटर के 3 टाइप्स रहते हैं. वी हैव द कंपाइलर, असेंबलर एज वेल एज द इंटरप्रेटर. तो कंपाइलर में क्या रहता है, एक सेकेंड, ट्रांसलेट वी कन्वर्ट द इंटायर प्रोग्राम ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ मशीन लेवल लैंग्वेज. ठीक है, तो ट्रांसलेटर की, एक सेकेंड में टाइप्स चेक कर लूँ. हाँ, पूरा जो प्रोग्राम रहेगा ना हाई लेवल लैंग्वेज में, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ लो लेवल, इनटू द मशीन लैंग्वेज बाय द कंपाइलर. देन असेंबलर क्या करेगा, इट विल जो असेंबली लैंग्वेज है उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, और लास्ट में इंटरप्रेटर है, इट विल चेंज द it will basically execute the source code line by line, one instruction at a time. ठीक है, तो it will convert it into binary language one by one. ठीक है, इसमें मैं एक बार डिफरेंस आपको अच्छे से बता देती हूँ. I'll just tell you what is written. इसमें दिया है, कंपाइलर बेसिकली रीड्स द इंटायर हाई लेवल सोर्स कोड, लाइक जैसे C++ या जावा में जो हमने हाई लेवल सोर्स कोड डाला है ना, पूरा एक बार में इट रीड्स इट, देन इट ट्रांसलेट्स इट इनटू अ कंप्लीट मशीन कोड फाइल बिफोर एग्जीक्यूशन. ठीक है, पूरा एक जो प्रोग्राम है ना, पूरा सोर्स कोड है उसको पढ़ेगा, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ लो लेवल लैंग्वेज या मशीन कोड. ठीक है, उसके बाद इंटरप्रेटर क्या करता है, ये वाला, इट ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट्स द सोर्स कोड लाइन बाय लाइन. इसमें क्या करेगा, पहले पूरा ट्रांसलेट करेगा पूरा ही,
and then it will be converted into low level language and then it will be executed. इसमें line by line it translates, ठीक है. It translates and executes the source code line by line, one instruction at a time, ठीक है. और नेक्स्ट क्या है ये, assembler translates the low level assembly language into machine code. ये लोग क्या कर रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में लेके जा रहे हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर, और ये क्या कर रहा है, असेंबली लैंग्वेज जो लो लेवल लैंग्वेज रहेगा उसको भी मशीन कोड में कन्वर्ट करके दे रहा है, ठीक है. फर्दर नीचे जा रहा है ये असेंबलर. तो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री. उसके बाद में we'll go back to the questions. क्या है, which of the following software is used to translate high level language source codes into machine codes? So the answer for this will be वही हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कौन करता है, कंपाइलर, ठीक है. तो हाई लेवल सोर्स कोड, और असेंबलर क्या करता है, असेंबलर विल कन्वर्ट इट इनटू हाँ, जो लो लेवल लैंग्वेज है ना, वो लो लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में डालेगा असेंबलर. अभी हमने पढ़ा था, है ना, जो असेंबली लैंग्वेज रहेगी, असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज होती है, उसको मशीन कोड में या तो बाइनरी कोड में डाल देगा असेंबलर. वेयर एज कंपाइलर विल डू HLL, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में डाल देता है, ठीक है. सो द आंसर फॉर दिस विल बी कंपाइलर. नेक्स्ट है, Gurdeep Singh is interested in creating a project report on a document using an open source software. Which of the following would you suggest for the same? तो उनको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज़ करने का मन है, ठीक है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. क्या क्या ऑप्शन है, इम्प्रेस, कैलसी, MS वर्ड या राइटर. तो देखो, राइटर विच इज़ अ पार्ट ऑफ द लिब्रे ऑफिस suite is a free open source document creation software. Unlike proprietary tools, like it is available to the public without licensing fees, making it ideal for students for creating project reports, ठीक है. जो MS वर्ड है या कैलसी या इम्प्रेस है, ऑल ऑफ दीज थ्री आर बेसिकली प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स. तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स का क्या प्रॉब्लम रहता है, इट इज़ नॉट अवेलेबल विदाउट अ लाइसेंसिंग फीस, है ना. तो whereas writer is available, it is an open source of document creation software, therefore it is available without a license fees also, ठीक है. नेक्स्ट है, MS Office does not contain which of the following as its, इसका नाम क्या था, राइटर, हाँ, ठीक है. MS Office does not contain which of the following as its integral part. तो क्या क्या है, MS Access, MS Word, MS PowerPoint या MS Paint. तो आंसर क्या है इसका, MS Paint, ठीक है. बेसिकली MS Paint इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेसरी, whereas MS Word, PowerPoint and Access are part of the MS Office suite, ठीक है. तो ये प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं हमें विंडोज़ के कंप्यूटर्स में. MS Paint is a basic graphics utility included with the Windows operating system as an accessory. It is not a part of the specialized productivity tools found in the MS Office suite, which includes Word, PowerPoint and Access. Next है, Microsoft Excel and Microsoft Word are examples of which of the following. So the answer for this is application software. This is very simple. Application software is designed to help user perform specific tasks while the operating system manages the machine. Softwares like Excel and Word are tools for the user. Next, which of the following is not an example of a web browser? So the options are Microsoft Edge, Google Chrome, Safari, Unix, etc. So the answer for this will be Unix, ठीक है. तो Unix, basically Microsoft Edge, Google Chrome and Safari are web browsers, applications used to access information on the internet, whereas Unix however is a operating system, ठीक है, that it is a multi-user multitasking operating system that manages computer resources, not a browser. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर. तो क्या क्या दिया, एप्पल, मैकओएस, विंडोज, स्काइप या लिनक्स. तो लिनक्स इज नॉट अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, इट इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है.
Proprietary softwares like Windows, macOS, and Skype has source code that is restricted and owned by a specific company, whereas Linux is an open source software, meaning its code is publicly available for anyone to use, modify, or distribute. Then WinZip software is an example of which of the following? तो dash दिया है. So the answer for this will be it is a shareware. ठीक है, it is basically a utility software used for compressing files. It is a utility for file compression. It is distributed as shareware, a model where users are granted a limited trial period to test the software's functionality before being required to purchase the full licensed version. ठीक है. Next है, I am a piece of code that is secretly introduced into a computer system in order to corrupt or destroy the data. Who am I? So the answer for this is very simple, virus. वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज. ठीक है, दिस में ऑल्सो बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. It is a program that replicates itself to infect computers without permission, causing crashes or data loss. So the first computer virus was named Creeper, and it was developed in 1971 by Bob Thomas. Next है, Dash is an antivirus software, so the answer for this is McAfee. ठीक है, तो McAfee is a dedicated antivirus software designed to protect networks and computers from malicious threats. It scans for and blocks viruses, unlike Excel. देखो Excel क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है स्प्रेडशीट्स के लिए. WinZip is a utility software for compression, and Paint ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है for painting. Next, which of the following companies is not known for developing antivirus softwares? क्या क्या है? McAfee, Kaspersky, Norton और WinZip. So the answer is WinZip. WinZip is a utility software used for compressing files. ठीक है, it is a kind of shareware. अभी पढ़ा था हमने. ठीक है. McAfee, Kaspersky, and Norton are industry leaders in cybersecurity and antivirus development. WinZip is known globally for file compression and archiving utilities, not for virus protection. Next, I am a friendly software created specifically to prevent, detect, scan, and remove malicious software from files or computer systems. Who am I? So this is very simple. The answer is antivirus. Antivirus or anti-malware software acts as a computer's immune system, scanning for and removing the threats. ठीक है, historical note क्या है? To fight the first virus, that is Creeper. This was created by Bob Thomas. The first antivirus program named Reaper was developed by Ray Tomlinson. ठीक है, तो डेवलप किसने किया था फर्स्ट वायरस? बॉब थॉमस ने, और उसका नाम था क्रीपर, और इसका एंटीवायरस बनाया था रीपर करके. राइमिंग वर्ड्स हैं दोनों, रे टॉमलिंसन ने. नेक्स्ट, डैश इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. सो द आंसर क्या क्या दिया? नॉर्टन, मैकेफी, क्विकहिल, ये तो तीनों एंटीवायरसेस हैं. टैली इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इट इज़ रादर अ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रहता है. Tally is distinct from the others. It is accounting software used for financial management. Antivirus software is strictly used to prevent viruses, scan systems, and remove malware. Key insight क्या है? Common antivirus के examples दिए: McAfee, Norton, Quickheal, Kaspersky, etc. Which of the following is an antivirus software? So the answer क्या क्या options दिए हैं? Acrobat Reader, MS Paint, MS, ये सब नहीं है. Quickheal is an example of an antivirus software. It is specifically designed to stop harmful programs that can damage a computer system, while Acrobat Readers reads files. Paint creates art, and MySQL stores data. Only Quickheal protects the system. ठीक है. कोर फंक्शन क्या है? इट स्टॉप्स हार्मफुल प्रोग्राम्स. तो ये एग्जाम्पल्स तो बताते हैं आपको. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? सो क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं? एम एस वर्ड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. गूगल क्रोम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. एंटी वायरस है. दिस इज एन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. फिर मीडिया प्लेयर इज ऑल्सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ठीक है. Utility software performs the essential maintenance tasks that helps the system to function smoothly. Antivirus is a utility because it protects the system infrastructure from viruses and threats, often coming bundled with the operating systems. ठीक है. So that is all for this video. Thank you. Please like, share and subscribe to my YouTube channel if you found this video helpful. You can also follow my Telegram channel for any updates. Kindly comment down below on any video suggestions which you may have. Thank you.